आप लोग प्लीज़ अपनी नशिस्तों पर बैठ जाइए प्लीज़. If you could seat yourself and we formally start the event. I know it's very hard where there are a lot of people and a lot of people energetic to meet each other and anxious to meet each other, but I would request you all to settle down. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, तो किरत से हम आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी आप किरत लगा दीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद. जज़ाकल्लाह. हम पाकिस्तान से हैं और हमसे पाकिस्तान है, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ अपनी सीट से खड़े हो जाइए ताकि हम नेशनल एंथम को ऑनर कर सकें. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर ताहिरा है. कुछ लोग आप में से वाकिफ होंगे, मैं वैसे तो प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन क्योंकि मीडिया से मेरा काफ़ी ताल्लुक रहा है तो पिछले 15 to 20 ईयर्स से मैं पीटीवी न्यूज़, पीटीवी होम एज वेल एज पीटीवी वर्ल्ड के ऊपर एंकर भी हूँ. साथ में FM 89.4 एंड ISPR के साथ भी मुंसलिक हूँ, और इसके साथ साथ मैंने US, कनाडा एंड मिडल ईस्ट से डिफरेंट किस्म के चैनल्स के ऊपर सोशल अफेयर्स के ऊपर बेतहाशा प्रोग्राम्स किए हुए हैं और सोशल वर्क्स में आगे हूँ. आज यहाँ पे आप सबसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में. इंक्यूबेशन का खवातीन से बहुत गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि हम अपने कोख में 9 महीने इसी इंक्यूबेशन करते हैं. उसके बाद उस बच्चे को आगे नर्चर करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, उसे खिलाते हैं और बड़ा करते हैं. और एक इंक्यूबेशन सेंटर भी एग्जैक्टली यही करता है और काबिल बनाता है. आज जितनी भी यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं जो कि बहुत ही एग्जेम्पलरी किस्म की खवातीन हैं, उनको थोड़ी देर में मेंशन करूंगी, जो बहुत सारा काम कर रही हैं डिफरेंट औरतों के लिए. डिफरेंट एम्पावरमेंट सिर्फ एक वर्ड नहीं, बल्कि हर वो औरत जो घर में बैठी होती है, जो शायद नहीं निकल पाती, जो अपने आप को किसी न किसी तरह मोहताज समझती है, उसको सिर्फ हाथ नहीं बल्कि उसको विंग्स दिए जाते हैं. और आज का ये जो महफिल है इसमें नेटवर्किंग भी होगी, ताकि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप आपस में मिलें, ये इसलिए है कि आप आपस में मिलके ऐसे ग्रेट आइडियाज को आज यहाँ पे जन्म दें, जिससे कि इतनी सारी खवातीन की जो फैमिली लाइफ है, जो उनकी इकोनॉमिक लाइफ है, उनकी इंडिपेंडेंस है, उनकी मेंटल स्टेट जो है वो बेतहाशा आज के बाद बेहतर हो जाए, एंड ओवरऑल एज पाकिस्तान हमारी जो है ग्रोथ हो, एम्पावरमेंट हो. जब मैंने मेडिसिन शुरू की तो मेरे साथ बहुत सारी खवातीन थी, लेकिन उसमें से बहुत ही थोड़ी थी जो एज डॉक्टर आज के
दिन प्रैक्टिस करनी है। और जो उनमें से कभी हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली लाइफ ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन जितनी भी खवातीन टेक में थी, इट वॉज वेरी दे वर वेरी लकी कि वो अपना बहुत कुछ जो है वो मैनेज कर पाई साथ साथ। और आज हम ये टेक मीटअप कर रहे हैं और हमारे टेक पे स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि हमारे रिलीजियस, हमारे सोशल, हमारे कल्चरल नॉर्म्स के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन होती है। औरत अगर निकल नहीं पा रही फॉर व्हाटसोएवर रीजन, उसको फैमिली से प्रेशर है, उसको बच्चों को देखना है, वो बहुत दूर ट्रैवल नहीं कर सकती, रात का टाइम है, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर वो टेक इक्विप्ड है, अगर उसके हाथ में कोई भी हुनर है, कोई भी चीज़ वो कर सकती है या वो किसी किस्म का नॉलेज या स्किल इम्पार्ट करना चाहती है, तो वो अपने घर के दायरे में, अपने कन्वीनियंस पे, अपनी टाइमिंग्स पे बहुत सारा काम कर सकती है, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट भी कर सकती है, न सिर्फ खुद इंडिपेंडेंट होती है बल्कि ओवरऑल एक मुल्क की मईशत में कंट्रीब्यूट करती है। हमसे पहले बांग्लादेश ने ये देखा और इंशाल्लाह हम ही जल्द देखेंगे कि ये सारी खवातीन जो हम मिल के, अगर हम ये नहीं होगा कि भाई वो बेचारी है, वो किसी की बेवा है या वो किसी की जो है वो डिवोर्सी है या कोई भी, मतलब डिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं, इट इज नथिंग एल्स बट इट इज द विलिंगनेस टू स्टैंड ऑन योर फीट एंड टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। हमें अब इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं है, हमें चैरिटी बेस्ड कंट्री बनने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल इन आवर हैंड्स एंड वी विल डू इट एंड वी डोंट हैव टू बी चूजर्स बिकॉज वी आर नो लॉन्गर beggars. When we have it in our hand, we are the king and the queens together. So we are the king, we are not just, these are the queen makers around you, the people to empower you. आप देखिए मेरे सामने, मैं चुप नहीं रह सकती, मैं अम्बरीन को देख रही हूँ। मैं जानती थी ये घर में रहती थी, डिप्रेस्ड होती थी अपनी बच्चियों के साथ, निकल नहीं सकती थी। इन्होंने अपनी तरह की बेतहाशा औरतों को आज के दिन इक्विप किया। लेट्स ग्रो टुगेदर कम्युनिटी के साथ खवातीन जाती है, अपने एग्जिबिट्स को बेचती है और फिर अपना घर भी चलाती है, अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करती है। आज यहाँ पे ये कनेक्ट होंगी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी मजीद स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे एंड होपफुली लेट्स ग्रो टुगेदर की तरह के डिफरेंट कम्युनिटीज एक्सपोर्ट में भी जा सकेंगी। अब मैं इस सब के पीछे जो हाथ है उनको इनवाइट करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और वो जो है इस बाकायदा इस इवेंट को जो है वो आपको वेलकम भी करेंगे, इंट्रोड्यूस भी करेंगे और ही इज द मैन बिहाइंड इट, द वूमन बिहाइंड इट, जो अपने बच्चे को बिल्कुल ओन करते हैं। मैं जैसे एक खातून का मैंने नाम लिया तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये तो हमारा स्टार्टअप है, हमारा बेबी है, सो ही ओन्स इट दैट वे। सो आई वुड लाइक टू प्लीज इनवाइट नाइकैट के मिस्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है मिस्टर इमरान जातल्ला ऑन द स्टेज प्लीज। Thank you so much for having this for us, for creating an opportunity and making us all feel like your children, even though you're not. हमें आपको अब कहना चाहिए शायद पापा जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ताहिरा, आपने ज़रा ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर दिया। दे आर माई लाइक माई कॉलीग्स, आई एम नॉट दैट ओल्ड। Special thanks to all the guests, नौरीन, गुलजेबा, उसके बाद कैप्टन कदर, नदीम मलिक साहब, एवरी सिंग, आतिफा, उसके बाद आई एम फॉरगेटिंग फ्यू नेम्स, फातिमा, अनिला, एवरी वन ऑफ यू, वी रियली ग्रेटफुल आमना फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और इस गेट टुगेदर का मैं पर्पस बयान करता हूँ और देन फिर ये रिकरिंग एक्टिविटी हर मंथ जारी रहेगी। Well, they say it takes a village to raise a child, and startup is actually like building a startup is like raising a child. So we at Nicat, हम एक incubation center हैं, हम एक diverse community build करना चाहते हैं जो कि सिर्फ टेक्नोलॉजिस्ट पे मुश्तमिल ना हो, जो सिर्फ मर्दों पे मुश्तमिल ना हो, वो सिर्फ फीमेल ना हो। तो हम एक डाइवर्स कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं। उसके लिए हमने एक ये मंथली मीटअप का सिलसिला शुरू किया है। पहला मीटअप हमने विमेन थीम किया है, सो दैट वी शुड सेलिब्रेट द 50% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन। और एक तो हम प्राउडली यहाँ से, इस स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहते हैं कि NIC इज़ फॉर एवरीवन, नाइकैट इज़ फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर फीमेल्स। मेरी अपनी 2 बेटियाँ हैं एंड आई बिलीव कि हमें, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंडिविजुअल, एज द लीडर ऑफ दिस प्लेस, कि हम एक बेहतर दुनिया उनके लिए छोड़ें जो हमने इनहेरिट की उससे। पाकिस्तान में अगर तरक्की करनी है तो मेरा एक रिलीजियस बिलीव है उसमें फीमेल की वर्क पार्टिसिपेशन
उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी मर्दों की। और पाकिस्तान के पीछे रहने की एक बड़ी वजह यही फीमेल की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ना होना है। अगर आप इसकी एग्जांपल लें, बांग्लादेश, फिलीपींस और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया है, वहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स की वजह से वो इकोनॉमीज़ ग्रो कर रही हैं। और 50% ऑफ पॉपुलेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। The message, a very loud and clear message from this platform is that we want to celebrate you, we want to bring you, we want to include you into the every sphere of life, especially startups, and aerospace is no exception. अब मैं थोड़ी सी मार्केटिंग कर लूँ अपने सेटअप की। We are Nicat, NIC for National Incubation Center for Aerospace Technologies. ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इग्नाइट उनका एक इदारा है उनका, और NASTAP, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, उनका जॉइंट वेंचर है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इज अ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स। ऑलरेडी 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स अक्रॉस पाकिस्तान बन चुके हैं, एंड विद मोर इन द पाइपलाइन। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का फंडामेंटल प्रॉमिस होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि जहां आपको बिजनेस बनाने में, बिजनेस ग्रो करने में आसानी प्रोवाइड की जा सके। और स्पेशली वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है कि जो रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस को बनाने के और उसको ग्रो करने के, उनको सॉल्व करे। सो वो चाहे बिजनेस कोई मेल रन कर रहा है या फीमेल रन कर रहा है, दोनों को ये सर्विसेज चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क ये प्रोवाइड करता है। इग्नाइट ने इस तरह के पहले 7 NICs बनाए, दिस इज द 8th एंड दिस इज द फर्स्ट वर्टिकल वन जो कि एरोस्पेस फोकस्ड है, और इस पूरे रीजन में ये पहला एरोस्पेस फोकस्ड इंक्यूबेशन सेंटर है। हमारा मैंडेट इज बोथ एरोस्पेस एंड आईटी। सो हमारे पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। हम एनुअली 50 स्टार्टअप्स इंडक्ट करते हैं। अब तक 10 से ज़्यादा फीमेल लेड स्टार्टअप्स हमारे पास आ चुके हैं। ईच वन ऑफ यू हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। और एरोस्पेस को मैं अगर आसान कर दूं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एरोस्पेस इज़ फॉर एवरीवन। एरोस्पेस की पेरिफेरी पे ट्रैवल एंड टूरिज्म भी आता है, एरोस्पेस के अंदर मेडिसिन भी है, एरोस्पेस के अंदर केमिस्ट्री भी है, एरोस्पेस के अंदर मटेरियल्स भी है, एरोस्पेस के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, टेक्सटाइल। सो एवरी वन ऑफ यू, चाहे आप फाइनेंस से आ रहे हैं, चाहे आप मार्केटिंग से आ रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, किसी भी वर्टिकल से आ रहे हैं, यू हैव अ स्पेस इन एरोस्पेस. So this place is open, this place is for you. I want to thank the partners for today, especially Pasha, so thank you very much. उसके बाद इदराक, उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं बेटर वर्ड्स यूज़ कर लेता हूँ कि उस्मान वो बूस्टर है जो पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम को चाहिए था, और ये वो बूस्टर डोज लग गई है पाकिस्तानी स्टार्टअप. So thank you very much all the partners, and we celebrate women not just in tech but in every business. Thank you very much. तो बेसिकली ये जो स्पेस है ये खला नहीं है, वो वाली स्पेस नहीं है, बल्कि इट इज क्रिएटिंग स्पेस फॉर योरसेल्फ इन दिस कंट्री, इन दिस सोसाइटी एंड इन दिस यूनिवर्स एज अ होल. तो आपका किसी भी शोबे से ताल्लुक है तो आप इस इंक्यूबेशन सेंटर, इसकी सर्विसेज, इसके स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते ताकि आप के बजाय एक कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द इकोनॉमी बने. इन्होंने बहुत सारे नाम, उनमें से बहुत सारे नाम मेरे सामने, हम लोगों ने साथ ही अपनी जर्नी शुरू की, जिसमें नौरीन भी है, जिसमें गुलजेबा है, और वही वो खातून है जिनके बारे में वो ये कह रहे थे. क्योंकि ये जो जर्नी थी इसमें डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस आते रहे, डिफरेंट किस्म के इन्होंने सेटअप शुरू किए, उन्होंने फेल किया, इन्होंने एक और सेटअप शुरू किया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. सो इट इज अ मैटर ऑफ we keep trying, we keep trying again and again, and people is AI and IGI and the Hercubator, all these people have taken this initiative कि उन लोगों के लिए बार बार धोखा खा रहे हो, जिनकी बिल्कुल उम्मीदें खत्म हो गई हो, जिन्हें लग रहा हो कि इस
लोगों को ग्रो कराना चाहते हैं तो दिस इज द प्लेस फॉर यू। और अब हम जिनको दावत दे रहे हैं, अक्सर बच्चों को कहते हैं ना द स्काई इज द लिमिट फॉर यू, तो इन्होंने इसको जरा लिटरली ले लिया एंड शी टुक द स्काई टू द लिटरल सेंस। सो शी इज अ कैप्टन, शी इज अ पायलट एंड यू हैव seen her all, she's very famous, but what is she more famous for than just riding the skies or soaring the skies is that actually she's running this very wonderful digital platform where she's making so many other girls who aspire or dream like her to be able to become pilots like herself online. And I would like to invite Captain Qadar Sarfaraz. She is CEO at Airmen's Ground and she's a very inspiring woman and I'm sure जो भी उनको देखता होगा वो सोचता होगा अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, the wings herself. Assalamu alaikum everyone. Wow, what a constellation to see. The brains and the beauty all together over here. MashaAllah. I loved meeting all of you. I think I have already met and known most of the women over here. Meet show and today tech industry actually makes you envision whatever you can see in your brain and mind, whatever you can envision, you can actually create that. It must be impactful, first of all. It must be a problem solver, and tech is the problem solver. One thing. The other thing is that never tell yourself the negativities, whatever happening around you. My startup is actually the indication that anything that you can envision, you can actually achieve it. I controlled Airmen's Ground single-handedly, but I was locality, you're actually dealing with the 8 billion on this earth, and you're part of all the continents which are on this planet. And having the aerospace, now I can see that we have already left the gravitational force and we are in the air now, alhamdulillah. Pakistan is actually rising, and the Nicat is the example of that Pakistan is in good times. So yes, one thing, whatever you people are doing, you must be going through many of the problems. You must be telling yourself that yes, there are the issues that are occurring, but no, tech is the name of possibilities. You will soon find a solution. Try to ask for the solution. Inshallah, 1 or 2 people will answer your queries. Obviously not all of them can answer it. And yes, thank you, and let's meet after this meetup. Bye. थैंक यू सो मच। आपके वर्ड्स भी बिल्कुल आप ही की तरह थे, उन्होंने वाकई हम सब की जो
टू सस्टेनेबल रीयूजेबल एनर्जी, तो उनकी क्या ही बात है। तो अब मैं इनको स्टेज पे जो इनको मेंशन करने लगी हूँ और बुलाने लगी हूँ, इट्स विद ग्रेट ऑनर आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस फातिमा अनीला ऑन स्टेज, एंड मिस फातिमा अनीला विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट हरसेल्फ. शी इज CTO at One Network. Thank you very much, Dr. Amna. Assalamu alaikum, everyone. I can see a lot of familiar faces, and I'm so happy to see you all after a long time. And I can see some really young faces, mashallah. So NASTP पर जाना आज देखने का मौका मिला, थैंक्स टू इमरान. जज्बाती हो गया, लेकिन वो छोटे बच्चे पापा कहते होते हैं, कोई बात नहीं. अभी बाहर मुझे कह रहा था बहुत सीनियर है तो अंदर मुझे पता चला कि वो यहाँ पे वो खुद सीनियर हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए. नजर नहीं आ रहे इमरान, कहाँ गए, गायब हो गए. अच्छा, सो खैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर तायरा. एमटेक या मोटरवेज के ऊपर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उस ट्रांसफॉर्मेशन में यस उस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का बहुत बड़ा हाथ है, और उसकी वजह से एक सेंसिटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई कि हमें बहुत से ऐसे काम करने की ज़रूरत है जो दुनिया में बहुत पहले हो गए थे और हमने अब करना शुरू किए. तो 2020 में हमने इस सफ़र का आगाज़ किया. हमने सोचा कि हमें ये मोटरवेज को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा डिजिटल मोटरवेज में, और सिर्फ पेमेंट सोल्यूशन नहीं बल्कि मोटरवे पे सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन जो है उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, जिसमें मोटरवेज पे चालान भी होते हैं. आप सब ने देखा होगा मोटरवे पुलिस के बहुत सारे एहलकार बेचारे जब ओवर स्पीडिंग करते हुए गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं तो बेचारे खुद उस गाड़ी का शिकार हो जाते हैं. या आपने सुना होगा कलर कहार पे बहुत सारे हादसा हुए पिछले कुछ अरसे में. तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास जवाब एक ही है, और वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल. क्योंकि मोटरवेज पे जितनी हाई स्पीड ट्रैफिक होती है, उस हाई स्पीड ट्रैफिक को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता. तो वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में उसका शुरुआत की गई, और 2020 से लेकर आज 2024 तक पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक चल रही हैं. तमाम मोटरवेज के ऊपर ये डिजिटल टोलिंग सिस्टम जो कि और इसके अलावा इसका सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो गया है. इस वक्त उसके ऊपर काम हो रहा है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, और उम्मीद है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह. और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि इस काम को कॉन्सेप्चुअलाइज करके शुरू करने में मेरा एक बहुत बड़ा हाथ रहा, और मैं वन नेटवर्क की फाउंडिंग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की हैसियत से इस काम का आगाज़ किया. और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस काम को यहाँ तक पहुँचाने के बाद अगले सफ़र पर निकलने के लिए तैयार. अब कुछ और करेंगे. इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ तक क्योंकि मोटरवेज पाकिस्तान के तकरीबन 3000 किलोमीटर्स पर फैली हुई हैं, और इन 3000 किलोमीटर्स में हमारे पास तकरीबन 750 से 800 शहर या इंटरचेंजेस हैं जो कि इसके साथ कनेक्ट होते हैं. उन 800 शहरों के इंटरचेंजेस के दरमियान में हमारे पास कोई तकरीबन 100-150 के करीब सर्विस सेंटर्स हैं, सर्विस एरियाज हैं वो हैं. लेकिन इसके अलावा इस 3000 किलोमीटर पे बहुत सारे ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे दूर दूर तक आबादी नहीं है. वो पैचेस हमारे लिए, और दूर दूर तक कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई लाइन नहीं है, बिजली नहीं है, कोई और भी सहूलियात मौजूद नहीं है. फेंस्ड रोड होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता, लेकिन वही एरियाज हमारे लिए वल्नरेबल बन जाते हैं. तो उन तमाम एरियाज, ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करके, ऐसी पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करके अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको लिट अप कर दिया गया है विद सोलराइज्ड हाईवे लाइट्स के साथ, जो कि पाकिस्तान में हमेशा इंपोर्ट होती थी. इस वक्त वन नेटवर्क उनकी लोकल
जो है वो असेंबलिंग कर रहा है। सो पाकिस्तान में लोकल असेंबलिंग के साथ सोलराइज्ड हाईवे लाइट्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। इसके अलावा जो हमारा ITS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम है या इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरास के साथ उसकी जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स तैयार किए गए, जिसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की तमाम ऊट पटांग उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी, सिंधी, बलोची और ट्रक आर्ट वाली नंबर प्लेट्स को पढ़ा जा सके और उनको आइडेंटिफाई किया जा सके कि इनमें से कितनी सही ओरिजिनल और कितनी खुदा न खास्ता जाली हैं, और उसके बाद उन नंबर प्लेट्स की बेसिस के ऊपर उन गाड़ियों की सिक्योरिटी सर्वेलेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वन नेटवर्क ने इंडिजिनसली ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में यहीं रावलपिंडी में रहते हुए डेवलप की हैं। इन सारी चीज़ों के साथ हम जब ये काम कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल होकर काम कर रहे होते हैं। आप जब भी काम करें, कोई भी काम करें, जेंडर न्यूट्रल होकर जब आप काम करेंगे तो आपके काम का इम्पैक्ट खुद बताएगा कि आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है। और ये बात भी तय है कि मेरे पास जो नेटवर्क इंजीनियर्स लड़कियां थीं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लड़कियां थीं हैं, और जो लड़कियां मेरे पास पावर इंजीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो ख़वातीन हैं इसलिए वो मोटरवे के दूर दराज सफ़र पे नहीं जा सकती देखने के लिए कि वहाँ क्या किया जाए। सो उन सब ने वहाँ जाकर मेरे साथ रमज़ान में, धूप में, गर्मी में, बारिश में, अंधेरे में, क्योंकि रात को हमें काम करना पड़ता था, हर जगह जाके उन्होंने काम किया। और आज उन सब की along with of course all the men as well, primarily क्योंकि हमारे पास तकरीबन 75-25% की रेशो है, तो 75% को हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं किया कोई काम, उन्होंने बहुत काम किए और उनके साथ मिलके हम इस काम को इस काबिल बनाने में कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था तकरीबन 4 साल का सफ़र। अब 4 साल मेरे 2 जून को 4 साल मेरे कंप्लीट हो गए हैं वहाँ पे। अगले सफ़र के बारे में फिर बात करेंगे, अगला सफ़र फिर देखेंगे कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें इस मोटरवे की डिजिटलाइजेशन में भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा इस सिस्टम की इंटीग्रेशन विद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसेस, ताकि आपकी गाड़ियों का मुकम्मल रिकॉर्ड हर जगह पे सिंक्रोनाइज्ड हो, और जो हमें प्रॉब्लम होती है कि गाड़ी चोरी हुई और मोटरवे से निकल गई, वो उस प्रॉब्लम का भी अजाला किया जा सके। तो उसकी जो इंटीग्रेशंस हैं दे आर आल्सो इन प्रोसेस। जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या टेलीकॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी फिनटेक के इदारे हैं, उनके साथ इसकी इंटीग्रेशन टू मेक द पेमेंट्स इनेबलमेंट, दैट इज़ आल्सो इन प्रोसेस। एंड बहुत सारी हो गई, बहुत सारी इन प्रोसेस हैं, पाइपलाइन में है, आगे नज़र आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। Thank you very much for giving me this opportunity to talk about it, and I just wanted to share this कि ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिस वक्त 2020 में मुझे कहा गया, तो इसको कहा गया कि जी ये 5 सेकंड चैलेंज है। 5 सेकंड चैलेंज का मतलब ये था कि टोल प्लाजे पे हम इस्लामाबाद से लाहौर जाते थे तो तकरीबन 4.5 घंटों में हम लाहौर पहुंचते थे, लेकिन 2.5 घंटे रावी टोल प्लाजा क्रॉस करने में लगता था। तो कहा गया कि ये 5 सेकंड चैलेंज है कि टोल प्लाजे से हर गाड़ी 5 सेकंड के अंदर अंदर क्रॉस कर जाए, एंड दिस इज़ द वर्ल्ड स्टैंडर्ड कि जब आपका बैरियर वाला टोल प्लाजा है तो वहाँ से जो गाड़ी ने क्रॉस करना है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड इज 5 सेकंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू मेक इट 4.5 seconds. So our system works now in a way कि 4.5 seconds में हो जाती है। शर्त सिर्फ ये है कि आपके एम टैग में बैलेंस होना चाहिए, तब आप एक्सप्रेस लेन में जाएंगे, अदरवाइज आपकी वजह से घंटा पीछे बाकी सारे लोग भी रुके रहेंगे। ठीक है, so thank you very much. If there is any question, I am here to answer all your queries and questions. Thank you very much. उनको सुना और ख़ुद सुन लिया कि किस तरह से यही वो ख़वातीन हैं
जो कि एक्चुअली फाउंडेशन ले करती है फॉर अ वेरी ग्रेट फ्यूचर। आज यहाँ पे आप जितने भी लोगों से मिलेंगे उनसे सीखेंगे, और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की दुनिया में लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, पॉपुलैरिटी, पैसा बहुत ज़्यादा ऊपर है। बहुत इंसान जो है ना उसमें बह जाता है कि मैं लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में पड़ जाऊं, मैं कंटेंट क्रिएट करने की खातिर कंटेंट क्रिएट करूं। लेकिन आपने देख लिया कि वो जितना मर्जी सक्सेसफुल हो, वो किन चीज़ों का मोहताज है। 2 दिन में कोई डिलीट कर दे तो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। चीज़ ऐसी करें जो इम्पैक्टफुल हो, जो परमानेंट हो, जो कोई पॉलिटिकल या कमर्शियल एंगल ना रखती हो। इन द लॉन्ग रन आपको खुद ब खुद फ़ायदा हो जाएगा। पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल लीडर्स तो आते जाते रहते हैं, बट पॉलिसीज़ उन्हीं कंट्रीज़ की अच्छी रहती हैं जो हमेशा जो है वो वैसे ही रहें, किसी के भी आने या जाने से इफेक्ट ना हो। और ऐसे लोग जो एजुकेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो लड़कियों को एजुकेट करते हैं, जो उनको ये टेक्निकल पावरस देते हैं, दे आर इंडीड पीपल हु नीड टू बी सेलिब्रेटेड। और ऐसी ही एक मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की गेस्ट को बुलाने लगी हूँ, हिरा ज़ैनब साहिबा, पॉलिसी कंसल्टेंट एट USAID। मिस हिरा ज़ैनब हैज़ एन इम्प्रेसिव बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वेरियस इनिशिएटिव्स। तो वो खुद आपको बताएंगी कि किस तरह वो लोगों की लाइफ्स को चेंज कर रही है। हिरा ज़ैनब। अस्सलामु अलैकुम। नहीं भाई, अस्सलामु अलैकुम। When Imran reached out to me and invited me to this event, to be honest, I thought it will be like a corporate policy type का event। वही हमने जाके वही बातें करनी है कि policies होनी चाहिए, gender divide को हम कैसे improve कर सकते हैं। To my surprise, when I entered the room, I entered and saw this galaxy of stars. I entered and saw the representatives of 18% of women working in the technology in the IT force in Pakistan. And I saw the potential of Pakistan right there. So सबसे पहले round of applause for all of you for coming today and celebrating the spirit of women empowerment and women in technology today. अपने तारुफ की अगर मैं बात करूं, and I don't want to spend too much time on that because there are some things much more important than my तारुफ that I want to talk about. But मेरा नाम हिरा ज़ैनब है. I am Vice President Strategic Affairs at Contour Software, which is the second largest IT exporter in Pakistan. And I am heading mergers and acquisitions. तो जो startups की दुनिया से वाबस्ता हैं उनको शायद ये term समझ में आएगी. I'm leading the mergers and acquisitions for this entire region, Pakistan, Middle East and South Asia, for the Canadian Constellation Software. Other than that, policy के साथ मेरा ताल्लुक चलता रहता है. I used to be the Secretary General at Pasha, and currently I am a policy consultant with Asian Development Bank and USAID and Board of Investment, helping in the policies for Pakistan. And academia के साथ भी ताल्लुक चलता रहता है. Different universities के board में हूँ, और उससे पहले I spent more than a decade developing and implementing educational technology solutions. मगर अब आ जाते हैं मुद्दे पे. There are 3 things that I want to talk about. First, let's talk about the status of the country that we live in. पाकिस्तान की अगर हम बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम सुना है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअली एक रिपोर्ट रिलीज करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. किसी ने आज तक सुना है? फातिमा ने सुना है, सलीम साहब ने भी सुना होगा डेफिनेटली. सो एंड देयर इज अनदर लेडी. सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट टेल्स के एज अ कंट्री हम विमेन को लेकर आने में, एस्पेरिटी को जो हम जब बात करते हैं तो उसमें कहाँ पे पहुंच रहे हैं. There are 146 countries that participate in that report. आप कोई अंदाजा लगाना चाहेगा जिसने रिपोर्ट पढ़ी ना हो कि पाकिस्तान की रैंकिंग उस रिपोर्ट में क्या है. 146 कंट्रीज में हम कहाँ पे रैंक करते हैं? नहीं, इतने बुरे हालात नहीं है. किसी ने 100. So as per the
contribute. आपको कोई प्रॉब्लम दिखता है, think of a solution, go to your whoever you're working with a solution. If you want to start a company, be the leader in that. जिंदगी में अगर आपके अंदर इनिशिएट करने की कैपेबिलिटी आ गई तो you will always be in the leadership state. Third, believe. हम ख़वातीन का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि we are the biggest enemy of our own selves. We are the biggest critic of our own selves. We lie inside our own penitentiary. We are the ones who get in ourselves way. We are the ones who hold us back. चूंकि हमें लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, हमें लगता है हमसे मैनेज नहीं होगा. So stop coming in your own way. थोड़ा सा अपने आप को मार्जिन दें. Believe in yourself and be kind to yourself in the process. Fourth, communicate. As much easy it sounds, it's not easy. बहुत से लोग बहुत अच्छा काम पूरी जिंदगी करते गुजार देते हैं,
बट किसी को बताते नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं, एंड वो इंतज़ार करते हैं कि लोग खुद ही से नोटिस कर लें और शायद पता चल जाए. I hate to break it to you, in this world where there's so much noise, you have to be the one representing your own self, to communicate, be it in terms of learning from each other and be in terms of representing what you have done. And last but not the least, once you have done it all, do not stop it. Fifth is empower and support other females. आप खुद तो एक स्टेज तक पहुंच गई, मगर वहीं से सफ़र स्टार्ट होगा. I am a strong believer कि असल जो distinction है, that starts from home. When mother, how many of you are mothers? A lot of you. When mothers distinguish between a son and a daughter and say कि leg piece सिर्फ और सिर्फ बेटे को मिलेगा, that's when we start the inequality. That's when we first take the step in that. So as a female, as a mother, included these women events and started making us feel not just a part to be displayed during women events rather than all the events, and that would be a real inclusion. We would not be needing women only events, we would be there equally, and inshallah it should happen. And one more good thing with technology and all of you aspiring to be tech women is going to be, you're never going to feel scared. For example, being in the glamour industry, for instance, you always have to be worried about getting old, how you look, how you're going to face everything. This way, if you're technically able, if you have an education, if you have a skill, if you have something that you can impart to others and are making a difference like these wonderful women, you are actually liberated from dress codes, you are liberated from how you look, what you do, how they're going to judge you, because they have it in you and they will be eventually dependent on you. I would now like to request Mr. Nadeem Malik, finally a man, Secretary General of Pasha, who will come over and who is going to actually tell you what is his contribution, how is Pasha making a difference, and how is Pasha making you the tech woman that you have always dreamt to be and are going to be for Pakistan. Malik, currently I am a Secretary General
I know. I was here today to get inspired, not here to inspire you. One thing I always advocate, women empowerment world is kind of, don't take it very seriously. Women are empowered by the God, by the nature, by everything else. Have you heard behind every successful man there's a woman? What if there's no man in the world? Amani aman hai fir. You are empowered. What can somebody ask you about? That my start. Please start from my home. Say. If you are familiar with one of the largest YouTube based own things. So I think use this equalizer for your own advantage to it. Let me give you a small example. I was heading Microsoft in Pakistan, and we got this funding from US government under ICT for Girls program. There was a worldwide program. I went to the Ministry of IT and we decided how we're going to spend this money. I think a lot of ideas came in. The best idea we implemented in Microsoft that we train the girls from an orphanage house so they can learn technology and they can empower yourself financially and they can grow in their career as well. We train 500 girls in the very first batch, then we run a train of the trainer program, eventually the program onto the 50,000. So at Pasha, I think our ex-General Secretary sitting here was led by a woman by Jahara and Hira, and I'm also looking for next General Secretary General to be a woman as well. So today we have 3 verticals: policy, scale, marketing, and industry engagement. Out of these 4 verticals in Pasha, 3 are led by women. So they are the women leaders who are driving Pasha's success today. So I'm not going to take any credits. I'm only there for guidance purposes, thinking as well. So what I think a lot of people think is startups, they want to do something else. I think whatever you choose, whatever the path you choose, technology is going to help you to grow, to build and learn. And I think it's a constant learning. I still, as of today, my 40-year careers, I still learn. I'm still learning a couple of languages nowadays. How do I sharpen my skill? So again, I'm going to emphasize it. I'm not going to take much of your time. I'm here to get myself inspired and see such a great gathering, such a great inspiring woman here. I think you're all mothers, sisters, wives, everything. So I think you take the pride in yourself, have a confidence, you're empowered. Thank you very much.
Thank you very much. And now let us move to our partnership stage. We will be having some MOU signing ceremonies up here. And this is the beginning to this wonderful partnership where this Nicat, this incubation center, will be partnering up with, firstly, I would like to invite Rawalpindi Women Chamber of Commerce and Industry, and the great women from RWCCI will be coming over, and there will be a partnership with Nicat. So may I invite the concerned to come over the stage and then do the official MOU signing ceremony. And Rawalpindi Chamber has a very long history of supporting women. It had its own incubation center at a point. There were different initiatives, and it keeps bringing the women forward. I wish the men from the chamber were present today as well, so that they could also see how amazing the women representation here it is. Yes. About RCCI? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुंतहा शाहरुख, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रावलपिंडी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आज इस खूबसूरत शाम के साथ मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा इनके साथ मुंसलिक हो जाएं, कामयाबियों की इन रास्तों पे हम भी कदम ब कदम चलें, क्योंकि मैं समझती हूँ है मेरी मंजिल बड़ी दूर तक, है मेरी मंजिल बड़ी दूर तक, मुझे पाँव के नीचे ये सीढ़ियाँ अच्छी नहीं लगती। आपकी तालियों में मैं बुलवाना चाहूँगी मेरी वो सुपरस्टार्स, मेरी वो खूबसूरत ख़वातीन जो कि माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, बीवी हैं और रावलपिंडी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फ़ख्र है। मैं आप सबको कहूँगी आज मेरे साथ खड़े होकर सिग्नेचर करेंगी तमाम रावलपिंडी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबर्स। प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाइएगा। थैंक यू। तो मेरा ख्याल है स्टेज तो छोटा पड़ जाएगा इसके लिए हम पर incubator and Nicat. जो लास्ट इवेंट उस्मान ने कराया था, जो कि डिज़ाइन पीप्स का इवेंट था, मीटअप बहुत ही ज़बरदस्त था, उसमें फसी मेहता साहब ने एक बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कम्युनिटी का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना बगैर एक्सपेक्ट किए कि आगे से आपको क्या मिलेगा। आपको रिटर्न उधर से ही उसी वक्त नहीं मिलना होता, आप हर वक्त कुछ ना कुछ बेच नहीं रहे होते। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कभी ना कभी अच्छाई की गई आपको वापस ज़रूर मिलती है किसी न किसी सूरत में। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको टक्कर जाता है या आपकी अच्छाई वापस लौट आती है और किसी न किसी तरह आपको फायदा देती है इस दुनिया में भी और अगली में भी। ये जितनी भी पार्टनरशिप्स हो रही है रावलपिंडी अभी इस वक्त वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की और नाइकैट की, ये उन सब खवातीन के लिए एक डोर ओपनिंग है कि अगर कोई भी कुछ भी करना चाहता है, उसके पास मौके नहीं है, सही जगह नहीं है, इनफ फंड्स नहीं है, सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है, तो उनके लिए ये आइडियल एक एनवायरनमेंट है जहां वो आएंगी, एजुकेशन हासिल करेंगी, स्किल हासिल करेंगी, ट्रेनिंग हासिल करेंगी और इक्विप होके जाएंगी ताकि वो मजीद लोगों को हेल्प कर सकें। मैं भी आपसे मिलती हूँ इसके बाद। हम नेटवर्किंग इसके बाद अभी करेंगे। इस वाले MOU के बाद नेक्स्ट MOU पे भी बनना है। वी हैव 4 such very wonderful partnerships that are in the making and इस MOU के बाद we'll move on to the next। और उसके बाद फिर आपको नेटवर्किंग का भी टाइम मिलेगा and then you can talk to each other as much as you like and develop good bonds and connections that last a lifetime। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नाइकैट एंड RWCCI।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे नेक्स्ट एमओयू का, जो कि रिजिलिएंट वुमेन नेटवर्क एंड नाइकैट के बीच में है. तो रिजिलिएंट वुमेन नेटवर्क के जितने भी लोग हैं, आई वुड लाइक टू इनवाइट देम ऑन स्टेज सो दैट दे कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस partnership. Resilient women indeed. I think no woman out there is not resilient, and making a network of such resilient women is going to be a powerhouse in itself. So inviting the Resilient Women Network. Could I have the Resilient Women Network? You, both of you? All right, thank you. All right. So this is also going to be a very fruitful, very productive, very creative partnership between Nicat and Resilient Women Network, with a pledge to support each other, to help each other grow and nurture each other. So well begun is half done, and this is towards good beginnings. I hope that this picture of Pakistan remains in our minds instead of the bleak picture that some people tend to paint these days and make more and more people believe that Pakistan has nothing. Seeing all of you and seeing the amazing work out there, we can believe in Pakistan. We know we are Pakistan. We don't have to move out of Pakistan, and we will make it to not just the moon but beyond it as well. A big round of applause for Resilient Women Network and Nicat. Okay. Chaliye. Could we have the picture, please? And जो आपका मोमेंटो है इतना खूबसूरत है, वाकई इस पे लिखा होना चाहिए सितारों से आगे जहां और भी है. It is very, very beautiful indeed. And now our next MOU is between Idrak AI. Komal Babar, the lead product designer, will be signing it. Idrak AI and Nicat. So AI is the thing these days. Everything is always listening and seeing you and monitoring you so that they know and they can tell the market what is best for them to market to you and what is good for you. So we have Idrak AI, the youngsters in the picture. We see a lot of young blood in there, and a lot of very young blood also. So we have young and very young with us right now. So this is Idrak AI and Nicat. So these were the people behind the last meetup, and a very good meetup indeed, and this meetup and many more meetups to come. So these are the flames that have lit this very nice fire. It's not a fire, it's a torch or a beacon of light that's going to light many more lives, inshallah. So a big round of applause for Idrak AI and Nicat. And a big round of applause for Usman's mother for producing such a nice and intelligent child who listens to his mom and is making her proud. And all those mothers, and an inspiration that children like this who start earning from the age of 3, who develop skills, who develop opportunities, who give other children like them a reason to stay back and serve in Pakistan. It is indeed doing us proud. And then we have the last but not the least MOU. It is between Hercubator and Nicat. So it's Hercubator. So it's an incubator for her, for the she. So it has Herculean properties as well. It's going to make the she as strong as Hercules while incubating her, preparing her for this world and the next with all the remarkable things that she can do at Nicat and build herself. Do we have Hercubators? Representative Mahanur? Can we have Miss Mahanur please on the stage representing Hercubator? So this is towards another very
promising partnership between such young women out there, young girls, going to be fine women who are going to contribute a lot in the future. I would request all of you to share all of these on your social platforms, wherever you are, whether you are in a gathering, whether you are at your workplace, at your educational institute, wherever at a social gathering. Share this with as many people as you can. जितने लोगों से भी आप बताएंगे, उतने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उतनी उनकी बेटियों को मौके मिलेंगे कि वो आके जो है मजीद अपने आप को भी पॉलिश कर सके और हासिल कर सके हर किस्म का हुनर, ताकि वो इन ट्रू सेंस आगे बढ़ सके और कभी भी किसी की भी मोहताज ना हो, बल्कि सपोर्ट हो. A big round of applause for Hercubator and Nicat. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड स्पेशली इमरान जाटल्ला साहब का, इदराक एआई का, पाशा का, हर्क्यूबेटर का, डिजाइन पीप्स का और आईजीआई का. ऑल ऑफ देम दे गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी. अब आपके पास नेटवर्किंग की एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है. लास्ट इवेंट में तो हमने फोन के ऊपर अपना लिंक्डइन जो है वो खोल लिया था. हर कोई फोन पे अपना लिंक्डइन खोलता है और दूसरे के सामने जब जाता है तो वो दूसरा स्कैन कर लेता है. आप ये करना चाहें तो ठीक है. वो वैसे इसलिए था क्योंकि मर्दों में थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग मसला होता है, खवातीन को ऐसा कोई इश्यू नहीं है. वो वैसे ही जाके एक हग करेंगी और सारी आइस ब्रेक हो जाएगी. सो टुवर्ड्स ऑल दीज हग्स एंड किसेस एंड a very good partnership that's going to start from here, and we are going to tell the world कि औरत औरत को सपोर्ट कर सकती है. उसमें envy या pulling the leg नहीं होता. हम सब खवातीन हैं, एक दूसरे की सहेलियां हैं और हम सब अपने बच्चों, अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी पाकिस्तानी खवातीन के लिए एक साथ खड़ी हुई है. So the floor is open. You can network and then enjoy the scrumptious dinner. खाएंगी, वो जरूर खाएंगी, don't worry. And they will have scrumptious dinner that Mr. Imran Jatala has selected himself very meticulously. तो आप वो enjoy कीजिए and enjoy the rest of the evening. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद. नहीं आ रहा.
एवरीवन, सामने कैफे 59 की रूफ टॉप पे खाना आप सबके लिए अरेंज किया गया. प्लीज स्टार्ट मूविंग देयर सो दैट वी कैन कंक्लूड द इवेंट ऑन टाइम. थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन. प्लीज स्टार्ट मूविंग. आप सब प्लीज कैफे 59 की रूफ टॉप पे जाना शुरू कर दें. वहाँ खाने का एहतमाम है जो गरम गरम बहुत अच्छा लगता है. ठंडा हो जाएगा तो टेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा. आप सबसे दरख्वास्त है कैफे 59 की रूफ टॉप पे प्लीज. थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट द कोऑपरेशन.